birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anshuman. Happy birthday to you. Cake is really yummy, so आप सबके लिए भी thank you for all the wishes and ये बहुत ही yummy सा cake आप सबके लिए। I had planned a holiday with my family and all my friends. My friends have come from Kanpur, especially for my birthday. And so my family and Saraya's family, my friends, we all are going for a 3-day holiday. So we're just still planning because I'm not getting an off from the shoot. तो छुट्टी नहीं मिल रही है and I'm very unwell also. 2 दिन से मैं बारिश में शूट कर रहा हूँ तो बहुत तबीयत ख़राब है. तो but still let's see. कल से छुट्टी है मेरी 3 दिन, so I'm going out. So yeah, that's what I had planned and then all these surprises. I'm really surprised. You like it? और एंड आई लव इट बिकॉज मेरे बहुत सारे पुराने दोस्तों के भी मैसेजेस हैं और उनके साथ फ़ोटोज़ हैं एंड आई रियली लव इट. थैंक यू सनाया. कुछ नहीं, हमने प्लान किया था दिस बर्थडे इज डेडिकेटेड टू आई थिंक हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स हैव कम ऑल द वे फ्रॉम कानपुर एंड देन लास्ट नाइट हिज फ्रेंड्स केम एट 12 o'clock and yeah, everyone it was like house full and then his mom made so much food for all of us and we had a lot of fun but then he is shooting obviously उसको shoot से भी break नहीं मिल रहा so he's like really क्या करूँ, पार्टी करूँ, शूट करूँ, इंटरव्यूज दो, ये करूँ. So he's very like this but I think it's one of your good birthdays. Yeah, best birthdays. My family, my friends, my fans and the media and everyone. I've never got so much of attention in my life. इतने सारे लोग मेरे सेट पे बर्थडे के लिए and I'm very glad and thank you everyone. Thank you so much. So अगर सबने मेरे को देखा होगा मैं लाइफ में सिर्फ पजामे पहनता हूँ, मैं जीन्स डेनिम्स कम पहनता हूँ. So I've got so many pajamas and I really love them. So thank you. This is gifted to him by my mom because every time when he used to come home to meet me, like my mom used to always ask me कि ये जीन्स वीन्स नहीं पहनता, इतना ड्रेसअप नहीं होता. हम लाइक हाँ नहीं, बहुत सिंपल है, इसको ना पजामे बनियान में ही अच्छा लगता है घूमना. तो शीज़ लाइक कि मुझे समझ नहीं रहा था बर्थडे पे क्या दूँ. देन शीज़ लाइक काम करो, ये पजामे जो पहनता है कहाँ से मिलता है, मैं वही बल्क में खरीद लूँगी उसके लिए, वो खुश हो जाएगा. इस बर्थडे पे विश अभी तो विश किया है मैंने इस बर्थडे पे एंड आई विश्ड कि all of us we do good in our lives and the show also does good. It's very important for me and all of us around me. So yeah, that's what I wished for. Crazy birthday, मेरे सारे बर्थडे वैसे बहुत क्रेजी होते हैं. इस साल से पहले तक मेरे जितने बर्थडेज थे बहुत ही क्रेजी थे. So last time when I was shooting but then I came home and all of my friends I didn't know ऐसा कुछ होने वाला है. उन्होंने और मतलब बहुत सरप्राइजेस थे. तो मैं उसको इतना ऐसे सरप्राइजेस थे मैं डिटेलिंग में बता भी नहीं सकता आपको. और हमने इतना ऐसे सेलिब्रेट किया था कि हम 2 दिन तक गायब थे दुनिया से, हमें पता ही नहीं था. ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट हुए मेरे. और last year there was this incident happened. My birthday we had we partied and then later in the night we went to Marriott to have dinner and you won't believe all of us we were all puking and only puking and we didn't even like ऐसा टच भी नहीं किया हमने खाने को. वो ऑर्डर किया हुआ खाना सब बर्बाद और हम सब ख़त्म हो गए थे इतना. अरे drank also and then we partied very hard यार. But this year I'm very sober. I have because of my shoots. Every day I'm shooting, so I can't party a lot. So I'm not partying. But yeah, I've got 3 days off. So let's see. Next year when you come to ask me कि मेरा last year birthday कैसा था, then I'll tell you about these 3 days का story. So my friends are also back from Kanpur. So let's see. कुछ तो हम पागलपन करने वाले. Beautiful gift, beautiful सनाया. अभी मैं क्या बोलूँ सनाया को. Thank you so much and thank you for always being there. And thank you for all the support and thank you for all the gifts you give me. मैं तो देता नहीं उसको गिफ्ट. और अभी मैं एक बहुत ही अच्छा सा सेक्सी सा गिफ्ट देने वाली है ये, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रहा हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट गिफ्ट. और यू नॉट गिविंग मी दोस शूज और व्हाट? Oh yes.
So He knows his gift already. हाँ, तो अब हम ऐसा म्यूचुअली डिसाइड करके गिफ्ट ले लेते और हैं. मेरा बर्थडे है. अब इसका बर्थडे आ रहा है, मेरे को हेडेक हो रहा है इतना, ये सब सरप्राइज ये सब मैचअप करना पड़ेगा ना. सो या, सो थैंक यू सनाया, थैंक यू सो मच. वो तो नाराज था फिलहाल, वो एक्चुअली नाराज था हमसे क्योंकि इसने बोला था कि प्लीज़ लंच लाना मेरे लिए, तो इसकी मम्मा ने बोला कि हाँ हम. नहीं मैंने नहीं बोला था. सो दे कॉल्ड मी दैट वी आर कमिंग ऑन सेट एंड दे टोल्ड मी दैट दे आर ब्रिंगिंग फूड फॉर मी. सो आई डिडंट ऑर्डर फूड एंड नाउ इट्स व्हाट टाइम? It's 7 o'clock in the evening. I have not eaten anything since morning. It's my birthday. फिर लोग कहते हैं मैं पतला क्यों हो रहा हूँ, इसलिए हो रहा हूँ पतला यार, खाना नहीं आता घर से, तो मेरा तो दिन ही खराब है यार. तो यम्मी आया है ना. हाँ, थैंक यू फॉर दिस केक. You got? They got? You got? Very nice. I love the cake and I love cakes and He loves them. Anything that's food. Oh. thank you for the lovely cake. No, I have to do makeup again. I think different to watch him in Nagarjun because all his other shows were very different. So I watched him in his very first show called Ye Jawani Tara Didi on Channel V. I don't know why he's so reluctant about it, but I used to like it. I think it was very funny and his part was very funny. I can still watch it. Like it's not a boring show at all. I had fun watching it. So that was a very fun and young and cute kid character. Then Warrior High was also something similar. It was like he was playing a very young boy and very innocent. Ki matlab usko. हाँ, but he was a kid then. Very innocent, very vulnerable. You're talking about what? In what you're talking about which? हाँ, but both were young characters. What I'm saying in Nagarjun, it's like as the episodes pass by, he realizes that he has more responsibilities on himself about his family and then his love life, and then he gets to know कि पता नहीं मतलब his whole backstory and all. So I think it's a very difficult character to play. It's not easy. Playing any supernatural character is very difficult. So yeah, it's different for me, but I'm liking it. I'm liking it. So I have to go to the doctor and do my X-ray, but it's gone. My thumb is How gone. did you break your thumb? So I had to do a scene in which I'm hitting my head somewhere. So I had to hit here. और मैंने इतना जोर से hit किया कि वो पूरा मेरा thumb is swelled and it's gone. लेकिन तो होता रहता है रोज. He likes it, but उसको पसंद है stunts करना अपने आप, झगड़े करना लोगों से. Thank you to all the viewers who all are watching Nagarjun, and thank you for all the support. Thank you for all the love. और बहुत 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 क्रेजी एपिसोड्स आने वाले हैं. जो अब भी मैंने एक हफ्ते में शूट किया है वो तो कुछ अलग ही लेवल पे होने वाला है. सो जस्ट कीप वॉचिंग नागार्जुन मंडे टू फ्राइडे ऑन लाइफ ओके 9 PM एंड कीप showering the love and blessings. Thank you so much.